हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूरोप इनसाइट्स। मेरा नाम दीपक और मैं वीडियोस बनाता हूँ रिगार्डिंग ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इन जर्मनी एंड यूरोप। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन जर्मनी। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है, स्पेशली स्टूडेंट्स की, कि जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, कौन सी वेबसाइट को विजिट करना है, हाउ मच मनी यू नीड एंड कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन दिस वीडियो, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए देयर आर लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट यू हैव टू फॉलो। सो हियर यू कैन सी द प्रोसेसेस एंड we will discuss upon these processes one by one. The very first question, do you need a student visa or not? तो अगर आप जर्मनी जा रहे हैं लेस देन 3 मंथ्स तो आपको शेनिगन वीज़ा चाहिए, और अगर आप जर्मनी मोर देन 3 मंथ्स जा रहे हैं देन यू नीड अ जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। तो कैसे चेक करेंगे इसको? तो देयर इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। So I will write this website link in the description. Basically, there are three types of German student visas. First is German student visa, जर्मन स्टूडेंट एप्लीकेंट वीजा एंड जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीजा। तो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज जर्मन स्टूडेंट वीजा। जर्मन स्टूडेंट वीजा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी जर्मनी में इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल चुकी है, तो वो इस वीजा टाइप को ऑप्ट करेंगे। सेकेंड टाइप इज जर्मन स्टूडेंट एप्लीकेंट वीजा। तो ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो उनको अभी जर्मनी में एडमिशन नहीं मिली है, बट वो जर्मनी में जाएंगे, दे वांट टू गो टू जर्मनी फर्स्ट एंड देन अप्लाई फॉर जर्मन स्टूडेंट वीजा। तो द थर्ड कैटेगरी इज जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीजा। जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीजा बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में बैचलर्स करना चाहते हैं, क्योंकि बैचलर्स जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में होती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू बैचलर्स इन इंग्लिश। तो उस केसेस में आप जर्मनी में आके लैंग्वेज सीखोगे टिल B2 और C1 लेवल, एंड देन उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करोगे। इन सम केसेस अगर आप मास्टर भी जर्मन लैंग्वेज में करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन कम फॉर जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीजा एंड स्टडी जर्मन B2 और C1 लेवल एंड अप्लाई फॉर मास्टर कोर्सेज। द नेक्स्ट स्टेप इज जर्मन स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स। तो वीजा रिक्वायरमेंट का कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड इस प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज visa application document. So here you will see the list of the documents that you need for the visa. The second thing is you need a proof of financial statement. इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ब्लॉक अकाउंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज हियर you need a proof of admission in a German university. So next proof is your proof of previous higher education. Then there are certain other documents that you might need is, first is health insurance, then in some universities you might require to produce a German language proficiency. The next important step is how to apply for German student visa. So first of all इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने नियरेस्ट जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट को लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं देन यू हैव टू लोकेट योर नियर बाय जर्मन कॉन्सुलेट और एम्बेसी विल बी दिल्ली। अगर आप अप्लाई करें लेट्स से इन ओडिशा देन जो नियरेस्ट कॉन्सुलेट है that is Kolkata. So this is the next step that you have to do. Then you have to go to their website and again check for the procedures and requirements for the German student visa. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका सेटअप वीजा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट। तो आपको वेबसाइट पे जाके वीजा की एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट सेट करनी है, एंड देन यू हैव टू चेक वेदर योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। व्हेन एवरीथिंग इज ओके देन प्रिपेयर फॉर द वीजा इंटरव्यू। जनरली वीजा इंटरव्यू फीस वेरीज करती है 60 to 75 यूरोस। फॉर कॉन्सुलेट एंड एम्बेसी में ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सो वेबसाइट पे जाके ये जरूर चेक कीजिए हाउ मच इज द वीजा फी एंड कैरी द वीजा फी विद यू व्हेन यू गो फॉर द वीजा इंटरव्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू अप्लाई फॉर जर्मन स्टूडेंट वीजा, एट व्हाट टाइम? सो द बेस्ट टाइम इज एज सून एज आपको जर्मन यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आता है you can start looking for the documents. Next question is how much bank balance is required or how much money you should have in your block account. So as of 2021 आपके ब्लॉक अकाउंट में 11,208 यूरोस होने चाहिए। द लास्ट स्टेप इज हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट अप्रूवल फॉर जर्मन स्टूडेंट वीजा। जनरली इट टेक्स फ्रॉम 30 days to 45 days. I hope I have clarified every question, and
You can ask me more questions if you have in the comment section, and I'll try to reply each and every one. And in the next videos, we'll come up with the information regarding how to open a block account, how to do health insurance, and जब आप जर्मनी में आते हो तो जर्मनी आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट हियर, एंड lots of such information. So please do like and subscribe this channel, and in this video series हम आपके सामने बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, so which will be very helpful for you. अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा, एंड अगर आप जर्मनी में देखना चाहते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल किस तरह का है, how people live here, not particularly Germany but other countries as well in Europe, तो वो सारी information and videos आपको इस चैनल पे मिलेंगी. So please do like and subscribe this channel and share with your friends, and see you in the next video.